Okay, Ji, welcome to the last module of this course, which is file handling API testing in Cypress. So you can see on my screen that we are going to perform following things: read, write, upload and download files. So I have added a new test file in my E2E folder and I called it as file.cy.js. So इस फाइल में I'm going to write my first test case quickly, and I will say it, then it's got title read from file. So in this I'm going to read a file. So you can see कौन सी फाइल हमने रीड करनी है इन द फिक्सचर फोल्डर. लाइक आई टोल्ड यू कि फिक्सचर फोल्डर में हमारे पास ऐसी फाइल होती है जहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट डेटा रखते हैं. सो यू कैन सी कि फिक्सचर फोल्डर के अंदर वी हैव एग्जाम्पल डॉट जेसन. सो यू कैन से नेम इक्वल टू साइप्रस ईमेल दिस. सो लेट अस ट्राई टू रीड दिस फाइल और फिर उसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली लेट्स अप्लाई सम असर्शन एज वेल. सो हम अपने इस पे आते हैं एंड आई वुड से cy डॉट fixture fixture, yes, and then I would say fixture के फोल्डर में यानी जाएं and then check for example dot json. So it can be any file in this folder, and dot I would say dot its. So this is a method which would copy check कि कोई data object like name which is in this file name. I would check कि name जो है does it contain name dot should assertion, and I would say equal, or I can simply type eq as well, space, and say जो डेटा हम देखना चाह रहे हैं Cypress. So let me save this one and let us execute this. अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ because we have added a new test. Right, so E2E, now I would run in Chrome. So I have two tests. I would run this one. So yes, it was able to read this file और उसमें उसे वो डेटा Cypress के नाम से मिला जिसे वो कंफर्म कर रहा है ड्यू टू assertion. So this is how we read from the file. What if I want to write into the file? उसके लिए हमारे पास जो कोड होगा that would be I would simply first copy this to save some time, and let me remove this one from here and call it as write into file. Okay, then I would say cy dot write file. Okay, and then I have to give the name of file जहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ. से मैं कहता हूँ sample dot txt, and what I want to write is hello. Well, so let me copy this and see कि ये test run होता है. Okay, this test was run. So if you can check कि क्या ये फाइल हमारे पास create हो गई है. Let me check. Okay, yeah, we can see this कि ये फाइल हमारे पास create हो गई है and we were able to write into this file. So this is how we can create a file and then write into that file. Okay, next thing we are going to do is we are going to upload a file onto the server. So we are going to use this site filebin.net, और इसमें ये कंट्रोल है जो हमें इनेबल करता है टू अपलोड एनी फाइल. सो लेट अस create a test file here in our, से यहाँ पे हम create कर लेते हैं. Let me call it as a
sample.txt और इसी को ही हम इसका जो पाथ होगा ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शन फॉर दिस. मैं क्विकली इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड आई वांट टू रन ओनली दिस. तो इसके साथ फिर हम ओनली का मेथड भी यूज़ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे डॉट ओनली एंड आई वुड से फाइल अपलोड फंक्शन एंड देन इससे हम रिमूव करते हैं. और सबसे पहले ऑब्वियसली वी नीड टू ओपन दैट साइट cy.visit और इसे हम कहते हैं लेट मी क्विकली कॉपी द एड्रेस ऑफ दैट साइट. Control C and Control V and then I would put a small weight here as well. ये वेट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि वो साइट अपलोड हो जाए, सॉरी साइट ओपन हो जाए. सो वैसे तो इसके अंदर लाइक इट हैज़ देयर ओन वेट बट जस्ट so that we can see it happening in front of us. So यहाँ पे and then I would say c.get और मुझे अब उसका फील्ड नेम चाहिए. मैं क्विकली यहाँ से देखता हूँ कि इसका नाम क्या है. I would inspect the element. So it is ID है इसका जी field. So I'll use this ID now and ID के लिए we know that we use sharp sign and Control V dot attach file method and then we will give the path कि जहाँ से हमें वो फाइल कॉपी करनी है. So it would say slash dot and then let me copy the path जो जहाँ पे हमने अपलोड करनी है वो फाइल. सो let me cut this from here. इसको मैं डी ड्राइव पे रख रहा हूँ जो फाइल हमने पेस्ट करनी है. सो लेट मी कॉपी द पार्ट्स. Okay, so here we go. So this is the code. Okay, so let me save this and try to see कि अगर ये work करता है. Okay, there is some error. The get fetch is not function. Okay, and why is this not a function? cy dot get this. So this is a site and then we click. Let me check if we are able to click on this or not. Okay. So didn't click on that. Okay, let me type again, not attach. Okay ji, for this we need to install a dependency. So let me quickly paste it here. So we will copy this dependency. So this is Cypress file upload. By default this is not present in the newer module, so it would download. Okay, so I think we are able to download it and then हमें यहाँ पे at the top we need to include this one as well. So I think now it should show us. Okay, yes, now you can see it is showing us the message, the function.
अब हम इसे क्विकली दोबारा रन करते हैं अपने साइप्रस को एंड लेट अस चेक कि हमारा ये रन होता है प्रोग्राम या नहीं। सो लेट मी रन दिस लॉगिन। सो फाइल अपलोड का फंक्शन हमारा रन होना चाहिए, ओनली दिस वन। Okay, sample.txt. I think I was not able to find this. Okay, let me place this file somewhere else where we can find it. मैं इसका पाथ चेक करता हूँ कहाँ पे है। In the D drive do I have this? So yes, in the D drive I have this file as txt। इसे कॉपी कर लेते हैं। Please save this now and see कि काम करता है या नहीं। I think this path is still not correct. So we are onto this folder test and I think it should work fine now. So it is still finding us in the fixture folder. Are we out of this folder or not? So okay, now I'm going to give the file that is in the fixture folder and I'm trying to upload this file. Actually I had some read protect on my other drives. So this is a file I want to upload and let us see if this works. So it is uploading the file, so it took a while. Yes, we were able to upload this file, you can see on your screen. So this is how we upload the file on the server.